वेलकम एंड नमस्कार। मैं हूँ पिया ऑन ITV गोल्ड। और आपने तो वो डायलॉग सुना होगा कि शादी के बेसिक कॉन्सेप्ट में ही जोल है, पर आज उस जोल को सुलझाने के लिए हमारे साथ हैं द वर्ल्ड फेमस प्रोफेशनल एंड मुंबई की टॉप मैच मेकर एंड रियलिटी स्टार, दैट इज़ सीमा टपारिया जी, जिन्हें लोग सीमा आंटी के नाम से भी जानते हैं। एंड शी इज़ कम ऑल द वे फ्रॉम मुंबई। सो वेलकम सीमा जी टू ITV गोल्ड। एंड नमस्ते। बिफोर वी टॉक अबाउट आपकी जर्नी के बारे में बात करेंगे, कैन यू टेल मी, डिड यू एवर थिंक दैट कि आप इतनी ज़्यादा फेमस हो जाएंगी? पिया, मैं क्या बताऊं अब, क्योंकि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि दिस शो विल गो सो वायरल, एंड आई नेवर ड्रीम्ड, इट वाज बियॉन्ड माय ड्रीम्स, एंड दिस शो हैज़ बिकम वायरल, इट हैज़ रॉक द वर्ल्ड, और हर कोई देख रहा है, एंड अक्रॉस द ग्लोब पीपल आर लविंग दिस शो एंड दे आर लविंग सीमा आंटी। इस शो में आई हैव शोन माई ट्रेडिशनल वैल्यूज़। आई एम अ टिपिकल इंडियन हाउस वाइफ और मेरे ट्रेडिशनल वैल्यूज़ शो में दिखाया गया है। तो एवरीबडी रिलेट्स टू देमसेल्व्स, दे से ओ, दे आइडेंटिफाइंग, ओ ये मैं हूँ, ये रिलेट कर रहे हैं, एंड पीपल लव्ड माई इंडियन ट्रेडिशनल वैल्यूज़, एंड इवन आई एम वेरी सेटिस्फाइड एंड हैप्पी दे हैव पोर्ट्रेड मी, माई इंडियन वैल्यूज़ दिखाया है शो में। एंड ये इंडियन वैल्यूज़ ने ही मुझे स्टार बनाया है। तो द शो वॉज बियॉन्ड माई ड्रीम्स। आई नेवर ड्रीम्ड दैट ओवरनाइट ये शो रॉक करेगा एंड आई विल बी ए सेलिब्रिटी. And since you said that because of you're proud of the traditional values, and that's why we love you too for all that. Yeah. So let's talk about आपकी जो journey है with matchmaking. How did it begin? Good question. Since childhood, I had a unique ability to talk to people, to connect them, to be social, and relate them, and identify people. Or I used to always like to go in social functions. This was that unique ability थी मुझे कि भाई ये सब था, and I was fond of traveling. ये सारी qualities थी, तो I thought कि अपने community में ये match making के लिए somebody should be कि help करने के लिए. So I thought why not I help and become a matchmaker, और ये मेरे community में काफ़ी help होएगी. Since मैं करती थी पहले से ही, अपने रिश्तेदारों में मैच करती थी और my relatives, friends and all. Then 25 years before, I did a match of my own sister Preeti, wow, who is staying happily in Boston. So then after that मुझे confidence आया कि why not do for my society. So since 2005 I started this matchmaking. And absolutely, this definitely is a community service, yeah, I would say. And so अभी हम बात करते हैं आपकी जो Indian matchmaking, जो आपकी journey है on Netflix की. So वो कैसे शुरू हुई, and why did you decide to do that show? In 2010 स्मृति मुंद्रा LA से आई मेरे पास, शी इज़ अ डायरेक्टर। तो वो आई अपने मैच के लिए। जब वो आके उसने देखा घर पे कि अरे ऐसे ऐसे होता है मैच मेकिंग एंड ऑल, तो उसको आइडिया है कि व्हाई नॉट आई डू अ डॉक्यूमेंट्री ऑन हर। देन शी डिड अ डॉक्यूमेंट्री। 4 years शी वॉज इन माई हाउस, शी टुक अ कैमरा एंड शी शॉट, मैं जो कुछ कर रही हूँ शी शॉट एवरीथिंग, एंड देन शी मेड अ डॉक्यूमेंट्री ऑन मी एंड माई डॉटर, एंड और भी 2 लड़कियां हैं, एंड आई थिंक एवरीबडी शुड सी, इट इज़ ऑन Amazon Prime in US. It's called A Suitable Girl, and that Suitable Girl released in 2017, and it got the best award, best movie award in Tribeca Film Festival. Wow. And it's on Amazon Prime. After that Netflix saw this and Netflix planned, why not we do a reality show in this, it will be one of its kind, क्योंकि आज तक ऐसा it's an untouched topic, so आज तक ऐसा reality show हुआ नहीं है. तो Netflix planned to do a reality show. They called me, or I'd never dreamt, it was beyond my imagination. I thought every 4 months Netflix कोई shows आते हैं चले जाते हैं, मेरा भी आएगा, मेरा भी चला जाएगा. But God was great, God was kind to me. The show released on 17th, and from 18th I was getting 1,000 phone calls. There was COVID, no one was there to phone उठाने के लिए, and the world loved the show. It has broke the record, and non-Indians, Indians, the whole world was watching this show. Absolutely. And मेरा favorite part वहाँ पे जब भी आप अपनी grand entry करती थी, I would love that, and I would be like thrilled to see that part. So tell me, आपका कौन सा उसमें favorite part है? The whole show was my favorite, and all the characters are my favorite.
So I would say that I loved the show, and really it gave me so much sense of satisfaction that since childhood I was just working for love and respect. But my passion, my hard work, and my vision towards this, I was just working for love and respect, but fame was the byproduct I got from this. तो आपको कभी लगा कि ये शो इतना वायरल हो जाएगा, एंड देयर वर सो मेनी मीम्स about the show. So how did you know, what was your reaction? See, Pia, more the memes, the show becomes more popular. Means people are looking so minutely at the show. They are making memes. But I loved my memes. I really, whenever I was having free times, I used to see my memes and enjoy. It tickled my funny bones, and really, memes से इतना मज़ा आ गया कि कोई भी शो में, I think so many memes have not been जितना मेरे matchmaking में हुआ, Indian matchmaking में. So I loved the memes and the show. Absolutely, and मुझे भी अच्छा लगता था वो memes देखने को, and Arey, it was what like really creativity nice. people had. वो देखो, see the positive side. Exactly. The creativity people, they have seen minutely what I'm wearing, what I'm talking, what are the dialogues, and they have made the memes on that. Absolutely. So there's a really, I'll tell you, the memes have made the show popular. सीमा जी, मेरे दिमाग में एक और सवाल आ रहा है कि बहुत सारे लोग परसीव करते हैं कि जो कॉन्सेप्ट है ओल्ड फैशन, ये मैच मेकिंग का बहुत ही ज़्यादा ओल्ड है, स्पेशली हमारी जो यंगर जनरेशन है. सो हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू दैट? See, I would say that matchmaking is not, it's a old fashioned बोलते हैं बोलो, but it's coming from thousands of years. तो there must be something in it जो thousands of years से आ रहा है, उसका कोई तो importance होगा. And matchmaking, when you do arranged marriage, two families are involved together. Number one, they are high risk नहीं of divorces or problems या कुछ भी हो, because हम लोग लड़का लड़की देख के we do it. We scan, we filter, अपन देखते हैं, दो families involved होती है, and the success rate is high. So this, I would say that this is not a, old process होगा, but this is a good process, perfect, but it depends on person to person. Somebody wants to go to app, they can go. Somebody wants to go through arranged marriage, they can go. It depends on person. But I would suggest that matchmaking, arranged marriage is a good process. काफ़ी success rate होती है इसमें. Absolutely, and as you said कि ये marriage सिर्फ दो इंसानों का नहीं होता है. It's involved, two families are involved in that. Two families are involved in it. So tell me, is there a difference? आप इतना travel करती हैं. Is there a difference, like आप इंडिया में कोई difference है like matchmaking में और here? What kind of difference have you seen? I would say that all the person in the, they are universal. होते तो same ही है इंडिया में और यहाँ सब जगह. But थोड़ा सा thought process अलग होता है. अच्छा. In India, they give more importance to the family, to the culture, and थोड़ा outlook, beauty वगैरह थोड़ा वहाँ importance ज़्यादा होता है. अच्छा. यहाँ पे वो सब नहीं है, and वहाँ पे जैसे वहाँ height का भी importance होता है ज़्यादा कि ये height होना चाहिए. It depends, अपनी अपनी thinking है, upbringing की बात है. अपने यहाँ पे वो सब नहीं है, but यहाँ पे success rate कम है क्योंकि लोग जल्दी से they don't decide. 2-2, 3-3, 8-8 साल तक मिलते रहते हैं, they don't decide. ये क्या सिस्टम हुआ? इंडिया में वैसे नहीं है. आई अलाउ ओनली 5-7 मीटिंग करो, कन्विंस हो गया, यस करो और नो करो, दैट्स ऑल. बिल्कुल. ये घसीटो मत, हाउ इट्स हैपेंस हियर. सॉरी टू टेल, बट द सिस्टम इज लाइक दिस कि 8-10 साल मिल रहे हैं, 5 साल मिल रहे हैं, 4 साल मिल रहे हैं, एंड दे आर नॉट डिसाइडिंग बिकॉज हियर द क्राउड इज कन्फ्यूज्ड, द चिल्ड्रन आर कन्फ्यूज्ड. इंडिया में हम ऐसा करने नहीं देते, बट डिसाइड करो, नहीं तो नहीं, हाँ तो हाँ. बिकॉज जो समझना है इन 4-5 मीटिंग्स दे अंडरस्टैंड, और एल्स दे डोंट अंडरस्टैंड द होल लाइफ. That I will tell you that thing. And जो भी हमारे ITV Gold viewers ये देख रहे होंगे और उनका मुझे लगता है आज सारा confusion दूर हो जाएगा. एकदम you have to decide yes or no, that's all. और one चीज I would say आजकल के youngsters में हो गया कि compatible नहीं है. हाँ जी. What is the meaning of compatible? आप दो सगे भाई बहन, are your siblings same? No. Or brothers sisters same? No. They have come from the same mother's womb. Are they same? No. Then how can you expect the girl and a boy coming from different mother's womb, how can they be same? बिल्कुल. So you have to little साथ में रहो. Naturally दूसरे के hobbies अलग है, thought process अलग है, likings अलग है. You have to stay together and mix and match and little adjust, little compromise and little be flexible, and you have to stay together. When you do all these things in office or at your work, or I can tell an example of airport, if the flight is late, what you do? You sit just
you don't shout and all, अरे I have to leave, the flight is not there, नहीं, आप चुप बैठ रहे हो, कॉफ़ी पी रहे हो, मैगजीन पढ़ रहे हो, वहाँ आप समझ रहे हो ना कि यू आर अंडरस्टैंडिंग, यू आर एडजस्टिंग, देन व्हाई नॉट अपने घर में या अपने फैमिली लाइफ में अपने क्यों नहीं कर सकते हैं. वेरी ब्यूटिफुली सेड सीमा जी. तो जो भी आपने यंगस्टर्स को आई विल टेल वन थिंग, हैव पेशेंस, ईगो ड्रॉप करो, बिकॉज एवरी इंडिविजुअल नाउअडेज दे आर अर्निंग, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो गया सब में, अपना थॉट प्रोसेस खुद का हो गया है, सो द प्रॉब्लम इज कमिंग. पहले के ज़माने में दिस ऑल वॉज नॉट देयर. We all adjusted little, we all compromised. What was the situation? You have to balance the situation. If these things happen in youngsters, then they will not have a problem. Wonderful and very beautifully said that. So, आप अभी family की बात कर रहे हैं, तो let's talk about your, family. How did you meet your husband? And आपने इस, शादी में, what is the biggest, I would say, lesson you have learned being married? See, आज in May, 40 years will complete for my shadi. So that was, I was 19, my husband was 21, and it was arranged marriage, because जब तो arranged marriage ही चलता था. And the shadi was between two families. ये बात है. My in-laws and all, they came, my husband came. I am from Gulbarga, Karnataka, a small place, born in a famous industrial family there, and Taparias also are a big industrial family. They came, family to family shadi होती है. I मिले, and myself and my husband, we spoke, we met only for half an hour, that's all. Wow. बस हो गई शादी. उसके बाद I always tell my clients, I'll tell the youth, आपको 60-70% मिलेगा. अगर आपको 60-70 में समझ में आ रहा है, okay, 100% nobody has got. साथ में रहते रहते you have to do 100%. That's the beauty of शादी. So मैं, मेरे husband में भी, we are east and west. Like his hobbies are separate, mine are separate. Likings are separate. कई होता है, because the 2% cannot be same. बिल्कुल. जो बोलते हैं ना हमको सेम चाहिए, she is not of my type, compatibility नहीं है, ये सब बेकार चीज़ें हैं. साथ में रहते रहते you have to match it little and stay together. So how we husband wife are staying, okay मेरे likings food के अलग है, my husband के अलग है, अलग अलग होती है. So we are adjusting and all, and we are staying happily. And give space to your partner and appreciate each other's strength. These are the qualities. Wonderful. So अभी आपने अभी 2 सीजन हो गए आपके इंडियन मैच मेकिंग के. So tell me, how does your life look like now? अभी आप इसके बाद, what is next for Seema Taparia ji? I was enjoying stardom before also, and I'm enjoying stardom now also. Every bit of stardom. But the show has changed my life 360 degrees. The love, respect, since childhood I was expecting from the world, I'm getting a lot of love and respect. So I would say, I would thank God कि पूरी मेरी life change हो गई है. How people are loving me, respecting me. And after the show, my life has changed as I'm doing lot of brand endorsements. I'm acting in some different movies, and I've done many like Big Boss and Bollywood Wives and all. I've gone in many shows. And people are loving me, and I'm doing a lot of brand endorsements and all. So the show has changed my life completely. Though I've become a celebrity, but people loved me in the show because they said, Seema auntie, you are humble, you are genius in the show, you are genuine. So we loved you in the show, you are honest. Wonderful. So Bhagwan kare, मैं अभी भी वैसी हूँ, and I want to be that way only. But the show has changed me 360 degrees. And I have to say that we do love you. You are Thank really you. a humble person. Thank you. So I just want to know कि अभी तक आप हमारे जितने भी candidates हैं who are like जिनकी शादियाँ parents ढूंढ रहे हैं, especially for the parents, would you want to give any advice? Because हमारे culture में parents का एक बहुत ही बड़ा part होता है play करना जब when it comes to kids' marriage. And of course, what would we want to say to them? आजकल ये हो गया कि पेरेंट्स सोचते हैं कि नहीं बच्चों को तो अपने आप करने दो. बट आई वुड ऑलवेज से कि पेरेंट्स ऑल्सो शुड गो एंड सी, बिकॉज फैमिली बैकग्राउंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आजकल नॉट ये वेस्ट साइड में फैमिली बैकग्राउंड का नहीं है, बट फ्रॉम वॉट कल्चर द गर्ल एंड बॉय इज कमिंग, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो द पेरेंट्स शुड सी वॉट इज़ द फैमिली बैकग्राउंड. What beauty is, I'll tell 1/10 of an age, but you see the heart of the girl and the boy, the family background, and the girl and parents के बच्चों के father and mother, that also plays a very important role. बिल्कुल. So parents को ये सब देखना होगा. ठीक है, बच्चे अपने पसंद से कर रहे हैं that, but this also follows because the two families are involved in that. So I think parents also have to see all these things.
So, Seema ji, since we are talking about youth, we are talking about confusion. So tell me, like आजकल के जो नौजवान लोग हैं, how can they balance that? अपनी पूरी इसको balance करके, how can they live an everyday life? Like I would say that in today's youth, they have a financial independence. सब लोग they are earning, and the thinking pattern also have changed. They just want to listen to themselves. They don't want to listen to the elders, and they have to balance their personal life and professional life. If you keep a balance, then there is no problem. Fourth change, कि patience is very important. Nowadays the youth doesn't have patience at all. So patience रखेंगे तो the things will go, and आपस में we must have a good understanding. अगर if you have a good understanding, patience and थोड़ा balance रखे अपने professional and अपने personal life को, then the life will go smooth. This advice I would give. And I would want to, thank you. But before I really say goodbye to you, आप और कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे यहाँ के जितने भी हमारे स्पेशली यूएस में जितने भी यंगस्टर्स हैं, उनके लिए कोई मैसेज आपके लिए? I would say that कि आप ज़्यादा कंफ्यूज में मत रहिए कि अरे जैसे अपने कोई मेनू कार्ड में अपने लोग देख रहे कि मेरे को ये सब क्राइटेरियाज चाहिए. दैट नो, आप सेलेक्टेड क्राइटेरिया रखिए, हमको ये चीज़ चाहिए, एंड व्हेन दैट कंप्लीट्स यू मस्ट प्रोसीड, बिकॉज 100% यू हैव नॉट गॉट, एंड रहते रहते यू हैव टू मेक इट 100%. एंड अ स्मॉल एडवाइस टू ऑल द यूथ दैट नाउअडेज वेरी पेशेंस इज़ वेरी लेस इन द यूथ. सो पेशेंस रखिए, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज और एडजस्ट करिए, एंड गिव स्पेस टू योर पार्टनर, एंड गिव एंड टेक रिलेशनशिप यंगस्टर्स शुड हैव, दैट इट्स लैकिंग इन द यंगस्टर्स. गिव एंड टेक रिलेशनशिप, ये सब थोड़ा आप करेंगे तो योर लाइफ विल बी स्मूथ एंड यू विल बी हैप्पी. Seema ji, I want to wish you all the best, and of course, season 3 is going to be coming soon, and I know, as we were talking earlier, we are going to see different things in there and a lot of stuff. So when is it coming? It's coming very soon. I think it might come in spring. Wow. Yeah. Wow. So we are looking forward to that, and all the best to you, and we look forward to seeing you in there. Thank you. Thank you, everybody. Thank you.